हो रही हो। Okay, Assalamu alaikum everybody. As you all know, my name is Areesha Fatima and Sir Mubarak has already given my intro, so let's start. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज लेट अस नो इन द मैसेज. आवाज का इशू है, वीडियो स्टक हो रही है, इस पीपीटी नजर नहीं आ रही. इफ देयर इज एनी इशू प्लीज लेट अस नो इन द मैसेज so that we can cater that on time. Okay, so this today's topic is basically self care. अगर उसको उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए तो अपना ख्याल रखना. हालांकि कितनी आसान सी बात है ना अपना ख्याल रखना, लेकिन उतनी ही मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी सर्टेन दैट वी डोंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सो कुछ क्वेश्चंस शुरू में मैं आपसे करूंगी, तो वो क्वेश्चंस के जवाब अपने दिल में खुद से अपने अपने आप से खुद से सवाल करना और उसका जवाब देना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट. सो क्या आप एक अच्छी नींद हासिल कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छी डाइट हासिल, बेशक दाल चावल ही क्यों ना हो? आर यू हैविंग अ प्रॉपर 3 मील कोर्स? नाश्ता प्रॉपर हो, लंच एक टाइम पे हो, डिनर टाइम पे हो. आर यू स्लीपिंग प्रॉपरली? आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स? Are you working properly without any having stressors in life? Are you जब तुम हम like अपना ख्याल रखना, राइट? जैसे कि नहाना सफाई नफ्स से माना, राइट? बट क्या हम तसल्ली से शावर भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं तसल्ली से, या बस भागम भाग जल्दी शैम्पू किया, कंडीशनर लगा, साबुन लगाया, बस निकल आए? सो ये छोटी चीजें तो शायद हमें बहुत मिनिमल लगती हैं कि यार डजंट मैटर, चलो आज टीथ नहीं ब्रश करते, चलो आज ऐसी जूड़ा बना के ऑफिस चले जाते हैं, राइट? आज चलो आज नाश्ता स्किप हो गया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लंच कर लेंगे. बट ये छोटी चीजें दे गो ऑन अ लॉन्ग रन because we need to take care of our body, because if we're not taking care of our body, we're not taking care of our mind. If we're not taking care of our mind, we're not taking care of our soul. So body, soul and mind, इन तीनों को नरिश करना है. हमारे पास यहाँ पे शायद बहुत से ऐसे होंगे जो कि प्लांट पेरेंट है, जो जिनको गार्डनिंग का शौक है, ठीक है? तो उन्होंने शायद घर में पौधे रखे होंगे या अपने लॉन में रखे होंगे. तो होता है ना, प्रॉपर्ली उनको एक टाइम पे जो है वो पानी देना है, सूरज की रोशनी देनी है. अगर कुछ पत्ते उनके मुरझा गए हैं तो उनको काटना है, उनकी सफाई करनी है. तो द क्वेश्चन इज, आर वी टेकिंग केयर? जिस तरह से हम अपने पौधों का, अपने हम लोग जानवर भी रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, हालांकि बेजुबान जानवर, लेकिन समझ जाते हैं अभी इस टाइम पे खाना चाहिए, इस टाइम पे इसको इसके साथ खेलना है, ये इसका टाइम जो शावर का है. आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ लाइक दैट और नॉट? So this is the question basically, and I hope by the end of the session हमारे पास ज्यादा नहीं लेकिन at least कुछ answers आप सबके पास होंगे. Let's start with the session now. Okay. एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये लोगों को लगती है कि अगर हम अपना ख्याल रख रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम सेल्फिश हो गए. वी आर सेल्फिश. अगर हम किसी की बात नहीं मान रहे बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग इज मेकिंग अस अनकंफर्टेबल. हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को शायद कंफर्टेबल, वी वांट देम टू बी कंफर्टेबल, तो हम मान जाते हैं उनकी बात, राइट? बट व्हाट अबाउट यू? वर यू ओके विद द आइडिया? वर यू ओके with what they were asking you to do? Like बहुत जैसे कि if everybody is making plan कि चलो आज lunch पे चलते हैं सब मिलके. If you don't want to go, it's fine to let them know that you don't want to go. You have some work done, right? कुछ है काम आपको करना है. You're busy. You have commitments at home. Does that make you selfish? What do you think? कोई आंसर करेगा? अच्छा, अगर आप लोगों ने अपनी वीडियोस ऑन करनी है, यू फील फ्री टू ओपन योर वीडियोस और ओपन योर माइक सो दैट वी कैन हैव एन इंटरैक्टिव सेशन. और हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, मोस्टली एक दूसरे को नहीं जानते, सो डोंट वरी, नोबडी इज गोना जज यू. ओके, सो दैट्स ऑल फाइन. Okay, I think nobody has to say anything. Coming back to it, so self-care is not synonymous कि हम एक self indulgent person बन जाएंगे, या हम selfish हो जाएंगे, या हम hypocrite हो जाएंगे. बिकॉज अक्सर हम अपने फ्रेंड्स से ये बात सुनने को मिलती है, तुम तो बहुत अपने में रहते हो, तुम तो बस तुम्हें अपनी ही करनी होती है. बट द क्वेश्चन अगेन इज, आर यू कंफर्टेबल विद द आइडिया दे वांट यू टू डू? तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है कि अपना
जब हम ख्याल रख रहे हैं तो वो हमें it's not us being selfish, it's not us being, you know, hypocrite. Okay. Acha, Areesha, just one thing that people are actually responding in chat box. If Okay, I there need to is see. open at your end, Oh just yes, prompt. now I can see. Oh, I'm sorry, I missed the messages. But I think it would be wonderful if you can open your mic and, you know, मुझे अपनी सब अपनी प्यारी प्यारी आवाज सुना के जवाब दे सकें तो that would be wonderful. Yeah, okay. So Nisha Khan ने लिखा है कि sometimes it feels uncomfortable to say no, but again क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस नहीं किया, हमने किसी को ना कहना प्रैक्टिस ही नहीं किया. If it's not in our practice, that's why हमें वो मुश्किल लगता है, that's why हम uncomfortable feel करते हैं. हमारे सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत, हम कहते हैं ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो बहुत ब्लंट है, ये तो अपनी मनमानी करता है. Why? क्योंकि उसने अपने प्रैक्टिस किया है कि मुझे अपने आप को प्योरिटी देनी है, मुझे अपने आप को पहले रखना है, you know. So अगर हम एक सर्कल की बात करें, आपकी जिंदगी में या इस वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या हो सकती है? Maybe you would say your job, maybe you would say your family, maybe you would say, you know, maybe you would say कि मेरी गाड़ी मेरे लिए बहुत सबसे ज्यादा अजीज है. But that's a wrong answer. सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में अगर कोई चीज होनी चाहिए वो आप खुद होने चाहिए. Like you should be the most important, most lovable, most respectful, and most valuable thing you have in this world. जब अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो वो तो दूसरों को कैसे नरिश करेंगे? एक अगर कप के अंदर, एक मगे के अंदर अगर पानी ही नहीं है तो कैसे कैसे how will you pour it? If you don't love yourself, if you don't have respect for yourself, तो आप दुनिया में कैसे देंगे? Right? Faryan ne likha hai, I don't think it makes you selfish perfect. That means you have that in practice. There should be a balance, yes. I'll just read it quickly so that I can move forward with it. Okay. मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी. Yes, Aisha. समटाइम्स हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स में, जैसे हस्बैंड हो गए, इन लॉज हो गए या बच्चे हो गए अपने, कि हम अब हमें अपना आप कहीं भूल जाता है. कहीं ना कहीं वो हमें बहुत तकलीफ दे रहा होता है, हम करना चाह रहे होते हैं और लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते हैं. तो मतलब हम कभी कभी हमें इस चीज का ख्याल भी नहीं आ रहा होता, जबकि ये हमें ख्याल रहना चाहिए कि हमारी जात अपनी इंपॉर्टेंट है. जैसे कुछ टाइम बाद शादी के आपको मियाँ को अपनी बीवी बुरी लगने लगती है क्योंकि उसको वो तैयार नहीं मिलती और अजीब सब चीजें होने लग जाती हैं. लेकिन वो चीज हमें नहीं ऐसा फील होता और हमें ये चीज दुख देती है कि मतलब हम इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी अगला हमसे कंप्लेन कर रहा है. तो ये सेल्फ केयर वाली चीज बिल्कुल एक इग्नोर हो जाती है. और मैं एज अ वाइफ मुझे लगता है कि मैं उस चीज को हैंडल करना मेरे लिए मैं मुश्किल हो गया है करना, और मैं करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रही इस चीज को. मेरा ये सेशन लेने का भी मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपना थोड़ा सा माइंड ओपन करूँ उस चीज पे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ. बिल्कुल. अच्छा, अगर आपकी एग्जाम्पल को, आपके ही क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलूं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है ना, हम औरतों को, अगर हम अपनी कल्चर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, कि शोहर के लिए तैयार होना है. ये कब तैयार होना है? अगर हाँ, खाना exactly. बना लिया है तो शायद एक शावर लेके एक अच्छा जोड़ा पहन के अपने आप को अच्छा महसूस करवा सकते हैं, है ना? हाँ. बिल्कुल. तो किसी को लेकिन हम अपने लिए टाइम ही नहीं छोड़ते हैं, टाइम नहीं हमारे मिलता लिए अपने टाइम ही नहीं है. ना मेरे पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है एक दिन में, हाँ. ना हाँ. आपके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है. वो अगर हाँ. 1 मिनट भी आपको निकालना है, वो आपको ऐसे क्रिएट ऑप्शंस अपने लिए करनी, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि एटलीस्ट 24 घंटे में 1 मिनट तो आपके लिए निकल सकता है ना. ज्यादा कुछ नहीं तो बस बिस्तर पे लेट गए, कमर सीधी कर ली, सुकून, आंखें हाँ. बंद कर ली, कि बस चलो बच्चे कमरे में नहीं है, मोबाइल साइड पे कर दिया. लेकिन वो 1 मिनट तो एटलीस्ट आई थिंक आप डिजर्व करती हैं, हम सब डिजर्व करते हैं. हाँ. है ना? Exactly. जी. Perfect. Okay, thank you so much, Aisha. Thank you so much for speaking out. Okay. मैं जब मैंने सेशन के शुरू में बात की थी कि सेल्फ केयर को हम कितना निग्लेक्ट करते हैं, हालांकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे माइंड के लिए, बॉडी के लिए, सोल के लिए. सो अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड्स,
2015 से अगर हम सेल्फ केयर की सर्चेस गूगल पे सर्च करें तो इट हैज डबल्ड. दैट मीन्स कि पीपल आर नाउ टेकिंग इट सीरियसली. अपने आप को नरिश कैसे करना है, अपने आप को प्यार कैसे करना है. लेट मी नो इन द चैट, डू यू लव, अपने आप से सवाल करो, डू यू लव योरसेल्फ. हालांकि बहुत ही ये कैसे हो सकता है, अपने अपने आप से कोई प्यार क्यों नहीं कर सकता, लेकिन देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो कि अपने आप से प्यार नहीं करते, which is quite sad, because if you cannot love yourself, how will you give love to others. आप अपने अपने बहन भाइयों को कैसे प्यार करोगे, आप अपने बच्चों को कैसे प्यार करोगे, अपने दोस्तों को कैसे प्यार करोगे. Okay, I'm having some answers. Okay, फरयाल ने लिखा है 50-50%, but at least you're there, right? On most days, yes, of course. Some days it's hard, yes. It's Mike 28. It is hard, and you don't have to have perfect days har waqt. You don't have to have a perfect time, perfect day, perfect week, perfect month. There will come a time jab aap bahut thake hue, bahut hard, like, you will be like, I'm done. I'm literally done with everybody. I'm done with my friends, I'm done with my family, and you would wish कि यार बस सब कुछ छोड़ के चला जाऊं. Maybe drop. Maybe मुझे कभी-कभी ऐसा, when I was doing my masters, there were times कितना मुश्किल होता था, मेरा दिल करता था कि मैं अपना बस पढ़ाई छोड़ दूं and just stay at home. So ये जो hard days है, these are very important in your life because they are gonna motivate you in life. They're gonna push you forward. We are busy loving others. That's so true. We would take care of everybody around us. We would love everybody around us. हमें होगा कि यार हमारे बच्चों ने खाना खाया, टाइम पे नहीं खाया, बहन भाई को कोई जरूरत है होमवर्क कराने का, कोई भी एग्जाम्पल, अम्मा के साथ भी हमने वक्त गुजारना है, बाबा के हमने पाँव भी दबाने हैं. लेकिन देन अगेन वो 1 मिनट क्या हम अपने लिए निकाल सकते हैं? But in all that, definitely love myself and proud of how far I've come. I'm also proud of you, and I think we all are so proud of you. Jarna Ahuja is saying, I try my best to get myself back at the track whenever my growth goes in minus. That is actually nice strategy. Again, हर बार चीजें लाइफ में अच्छी नहीं होंगी, and sometimes जब आपको लगे ना कि यार आप शायद थोड़ा सा ऑफ सीन चल रहा है जिंदगी में, तो रुक जाए. Stop there, take a pause, सांस लें, and then start again, because that is very good time to reflect कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई. I can do mistakes, like anybody can do mistakes. आप गलती करते हो, मैं गलती करती हूँ, लेकिन then again क्या हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझे ये बिहेवियर दुरुस्त करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. अपने रवैये को दुरुस्त करना, अपने बिहेवियर को. अक्सर अक्सर का तो हम अपने माँ बाप से जो है वो ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, लेकिन क्या जब हमें रियलाइज, गुस्सा तो सबको आता है, राइट? मुझे भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन देन डिड यू स्टॉप, डिड यू थिंक हाँ मुझसे गलती हुई, डिड यू गो टू देम एंड सेड आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी बाबा, मुझे नहीं करना चाहिए था. या अपने बहन भाई से, अपने दोस्तों से अक्सर औकात लड़ाई झगड़े हम क्या क्या नहीं बोल रहे थे, लेकिन अपनी गलती मानो और अपने रवैये को दुरुस्त करना, आई थिंक वो भी एक सेल्फ केयर का हिस्सा है. व्हाट डू यू थिंक? In giving, Altaf Mahmood Hussain कह रहे हैं, in giving love to others, I mostly ignore myself. अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि why? अपने आप को इग्नोर आप कैसे कर सकते हैं? So it's normal to feel that you would want to shut your. It's very normal. It's very no. हम पता है हमें क्या होता है कि हम जब इन सेलिब्रिटीज को या हम these influencers, these bloggers, क्योंकि इन्होंने एक हमारे एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि हमें लगता है कि इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है. They're going on trips, they're having like they're earning well, they're going to restaurants, they're eating अच्छा महंगा खाना, they're going out shopping, but again even they are not happy inside. That's again materialism. कि आपको लगता है कि शायद अगर मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी तो शायद मेरी शायद सारी जो मुश्किलात है वो हल हो जाएंगी.
एक शायद नया घर मिल जाएगा जिसमें if you're already living in a 2 bedroom apartment, right? लेकिन नहीं, मुझे 3 bedroom apartment चाहिए, तो हाँ शायद हो सकता है कि मेरी सारी मुश्किलात, क्योंकि हमने अपनी खुशियों को we have associated our happiness with the materials. If you're gonna get this, I'm gonna happy. If I'm gonna get that, I'm gonna happy. Is it so? क्योंकि happiness तो internal है, happiness तो internal होनी भी चाहिए, don't you think? I think, okay, Galaxy 8832, I think हम खुद से प्यार भी तब करते हैं जब हमारा वक्त अच्छा चल रहा हो, या वो इंसान हमारे साथ हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. I want to love myself, मगर होता यह है कि अकेले खुश नहीं रह जा सकते. Again, because you associated your happiness, if someone, that particular person, it could be your girlfriend, your boyfriend, your fiance, your partner, your husband, your wife, आपके बच्चे, आपने एसोसिएट करी ना खुशी कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में है तो मैं मुकम्मल हूँ. लेकिन आपको तो शायद अल्लाह ताला ने हम सबको मुकम्मल इंसान पैदा किया. हम जब हमारी पैदाइश से वी आर कंप्लीट, देन हमने क्यों ऐसा सोचा कि एक फलाम बंदे के आने से ही हम मुकम्मल हो सकते हैं. We often hear these words on Instagram or on social media, on Twitter, on Facebook, that he is my better half. Why? Why are you not your own better half? किसी और को आपको मुकम्मल करने की क्या जरूरत है जब आप एक खुद मुकम्मल इंसान हो? Okay, Askar is saying because they only show the best side of their life only. That's again true, right? कोई रोते हुए, कोई डिप्रेशन की हालत में, would they be shooting themselves? Would be they taking their pictures of themselves? No, because they have to tell everybody that how perfect they are. अच्छा, I think I'm missing a lot of messages, but I'll make sure कि मैं सबको carry on करूं. लेकिन साथ साथ we have to, yes. Okay, so there is a PhD associate professor, Paula Gil Lopez. She says that we have an epidemic of anxiety and depression and everybody feels it. Agar we go back to 2020, February, January, March 2020, जब coronavirus का हमें hit किया था and there was a major outbreak. So now everybody were taking care of themselves. उन्होंने अपने हम सब ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया था. We were washing our hands, we were taking shower, we were making sure कि कोई ऐसी चीज जो contaminate हो, we are not touching it. We were not allowing our own family members. मैं इतने ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो कि अपने रिश्तेदारों को उन्होंने मना कर दिया था कि भाई इस दौरान तो आप घर में नहीं आ सकते. We can talk on call, we can talk on phones, video calls कर सकते हैं, but never come out. Because you know why? Because they had to take care of themselves, कि they don't get infected by the virus. लेकिन then again, जो anxiety depression का epidemic है वो तो इतने सालों से है, उसको तो हम किसी खाते में नहीं लेके, हम उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे. Like, let me know in the chat box, do you feel anxious most of the time? Do you feel depressed most of the time? We do, right? हर इंसान is going through these anxious and depressive feelings. थकावट महसूस होती है, बोझ महसूस होता है, काम करने को दिल नहीं लगता, दोस्त कभी कभी दिल करता है कि बस दोस्तों से भी बात ना की जाए. Sometimes you say, I just don't feel like talking to anybody, I just don't feel like eating anything. Because what happens in depression के आपको भूख कम लगती है, आपका चिड़चिड़े हो जाते हो आप. So we feel it, but what are we doing to deal with it? हम जब सर दर्द हो रहा है, we are having Panadol. गला खराब हो रहा है तो we are having cough syrup. लेकिन जब ज़हनी तवाज़ुन हमारा बैलेंस में नहीं है, we are not thinking straight, we're not calm, we're not cool. What are we doing for that? That is again a question. Self-care is anything that you do for yourself that feels nurturing. Self-care की बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, ठीक है. अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसे जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो शायद वो जब भी कोई नई किताब लेते हैं उनके लिए वो एक सेल्फ केयर एक्टिविटी हो सकती है. द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ शॉप, seeing so many books over there, ये बुक बहुत अच्छी, ये बुक बहुत अच्छी, and then they would choose one or two. That can be a self-care activity for them, right? किसी को गार्डनिंग का शौक हो सकता है कि यार आज माली की दुकान में
जाना है और एक अच्छा सा पौधा अपने लिए लेके आना है. So that can be a self care. Anything that feels nourishing. आपको क्या अच्छा महसूस कराता है, आपको तरोताजा, आपकी मतलब होता है ना कि यार बहुत फ्रेश फील हो रहा है. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? हमारे आप में से बहुत लोगों के पास पेट्स होंगे. सो व्हेन यू गो एंड प्ले विद योर पेट्स, आप बहुत you feel really calm because let's suppose you have a cat. So the cat is purring, you're taking pictures, you're posting their pictures, you feel really calm, but because I am a cat person, so I know whenever I play with my cats, मुझे बहुत अच्छा, like I feel really happy. So anything that's nurturing for you can be self-care, part of self-care. Self-care की types की अगर हम आए तो there are a lot of types. ठीक है, there's physical, emotional, social, spiritual, personal, space, financial and work. इसमें mainly जो है हम top 5 को cover करेंगे. Physical self care में क्या क्या हो सकता है कि आपकी नींद पूरी है, आप होते हैं ना 6 से 8 घंटे की नींद हमारे पास होनी चाहिए. Are you taking that particular sleep? If you're sleeping late, वैसे काम कर रहे हैं और वो काम बहुत जरूरी है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन if you're sleeping late और सुबह आपको वही उसी टाइम पे उठना है 7:30 बजे, मे बी 6 बजे, 8:30 बजे, नींद तो वो पूरी नहीं हो रही. यू थिंक कि वो जो बाकी का दिन है वो आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा? क्योंकि आप जब आपने नींद पूरी नहीं की, you're not fresh, you're not going to work effectively, right? So नींद पूरी करनी है, अच्छा खाना खाना है. I'm not saying go to restaurants and eat pasta and pizza and burgers. दाल रोटी भी चलेगी, पराठे के साथ देसी घी भी चलेगा, मक्खन भी चलेगा, और ड्रिंक नहीं है लस्सी भी चलेगी, लेकिन एक हेल्दी खाना, 3 मील के नाश्ते भी आपने प्रॉपर किया है, लंच भी आपने टाइम पे, लाइक आई नो सम देयर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि दे डोंट फाइंड, मैं लंच नहीं करती, आई जस्ट डू डिनर. नो, इट्स नॉट गुड फॉर यू. Maybe it's cool, but it's not good for your health. If you're not putting fuel, हमारे पास लड़के ना जो अपने गाड़ियों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो गाड़ियों की ऑयल टाइम पे चेंज कराना है, मेंटेनेंस करानी है, कार वॉश कराना है, फ्यूल खत्म होने से पहले फ्यूल भरना है. तो वो जिस्म का फ्यूल कहाँ है जब खाना नहीं पूरा करेंगे, जब नींद पूरी नहीं करेंगे? हाउ गोना सर्वाइव द डे? स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, फिजिकल रिलीज, योगा, रेस्ट, आराम करना, ज्यादा कुछ नहीं, 5 मिनट आंखें बंद करके बस सुकून से अपने बेड पे 5 मिनट बैठ, 5 मिनट नहीं है 1 मिनट बैठ जाए, लेकिन आराम करना है. देन इमोशंस, अगर इमोशनल सेल्फ केयर की बात करें, अगर आप अभी भी अपने आप से सर्वाइव करें, ऐसी बहुत सी there would be many feelings in particular emotions, some hard emotions, जैसे कि हेट हो गया, रिजेंटमेंट है, किसी से आपने बुग्स रखा हुआ दिल के अंदर. Why are you keeping that? Aren't that making you heavy? वो आपको heavy नहीं फील करवा रहा? किसी से नफरत है, वो आपको उसको नुकसान पहुंचा रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है? वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है. किसी के साथ जेलसी है, वो उस इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है या वो जेलसी आपके जो दिल में है, आपके दिमाग में, आपके जहन में है, जो आपने रखी हुई इतने अरसे से, वो क्या उस इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? बिकॉज हमें ये अंदाजा नहीं होता. ठीक है, तो हमने क्या कोशिश कर, आई एम नॉट सेइंग इमोशंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, और हमारी जिंदगी में दोनों की ही उतनी ही अहमियत है कि हमने सैड, वी हैव टू हैव सैड डेज. हमें गुस्सा भी आता है, ठीक है, एंगर भी है, जेलसी होती है, फ्रेंड्स में होती है, भाइयों में होती है, बहनों में होती है. शायद मेरी वाली बहन ज्यादा प्यारी है मुझसे, यू फील जेलस. शायद मुझसे ज्यादा पतली है, यू फील जेलस. यू नीड टू एक्सेप्ट, यस आई एम जेलस. आप उसको नहीं गए, अपने आप को कहें, एक्सेप्ट करें, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बातें करें. हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता, आई एम अ वेरी कूल पर्सन. नो, गुस्सा हम सबको आता है, गुस्सा आपको भी आता है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट कि यस मुझे इस बात पे गुस्सा आया. रात को सोने से पहले सोचे कि आज ऐसा क्या हार्ड इमोशन मैंने फील किया. और उसने मेरी शायद असाइनमेंट कॉपी की थी उस टाइम, तो शायद मैं बहुत लाइक हाँ श्योर टेक इट, लेकिन लेटर दैट नाइट
accept it कि you did not like that she copied your assignment. उस टाइम से कुछ मांग लिया जो आप शायद किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम तो शायद आपने दे दिया, बट यू लेटर जब भी आपको मौका मिले, टॉक टू योरसेल्फ कि हाँ, आई डिड नॉट लाइक शी आस्क्ड मी दिस, आई डिड नॉट लाइक कि उसने मुझसे मांगा, राइट? तो इमोशंस का ख्याल रखना है. देन सोशल, देयर कम्स, किसी ने मेंशन किया था कि पर्सनल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, पर्सनल बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनल बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट अगर आप किसी सोशल सेटिंग में बैठे हुए हैं तभी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, या अगर आप सोशल मीडिया में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं. You having a WhatsApp groups हम सबके पास होते हैं. अक्सर हम you see friends are insulting you, friends are ridiculing, मजाक उड़ा रहे हैं आपका, बस चलता है दोस्तों में, खैर है. No, if you don't like it, you need to say it for yourself. No, I'm sorry, I did not like it. I don't take it as a joke. I think for you it's a joke, but for me it's not. क्यों इतना senti क्यों हो रहा है? So you need to take stand for yourself. If something is making you uncomfortable, don't be in that position. Talk it out, say it out. Okay, support systems. हमारी सर्वाइवल के लिए we need to have support system. वो आपकी दोस्त की शक्ल में हो सकता है. अक्सर मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं. वो अपनी हर बात शेयर करेंगे उनसे और हर चीज बताएंगे. सो their parents are their support system. कुछ बहन भाइयों के साथ बहुत क्लोज होते हैं. So you need to have a support system. कुछ होते हैं. There's a friend of mine, वो कहती है कि जब भी मैं I feel sad, मेरा रोने को दिल करता है, मैं अपनी बिल्ली से बातें करती हूँ. तो शायद वो उसने अपनी बिल्ली को ही वो support system बनाया. So you need to have a strong support system जो आपको सुने, जो आपको बताए कि हाँ तुम यहाँ पे गलत हो, तुमने ये गलत किया. You need to correct it. So you really need to have, because support system का आपकी जिंदगी में बहुत positive impact होता है. Husbands, like my husband is my support system. I have beautiful friends, really good friends, वो मेरा support system है. So they really encourage me, they really motivate me in life. जहाँ पे गलत होती हूँ मुझे बताते हैं. Does somebody want to say something? Okay, communication again, बात करना, right? हमें लगता है, अच्छा, मैं अक्सर अपने सेशन में बोलती हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो बात करके हल ना हो सके. अगर दो मुल्कों के बीच में भी कोई मसले, let's just take example of India Pakistan. Don't you think if both countries talk, बैठ के बात करें किस चीज को कैसे हल करना है, तो क्या वो हल नहीं हो सकता? Exactly, communication, बात करना है. नहीं खैर, I just wanna I don't wanna talk. Just I want to let it go. You can never let it go if okay, हमें कहना कि यार बस माफ कर दो, खैर है, भूल जाओ, इग्नोर करो. But if you're thinking about it again and again, अब सोचो, अभी let's just sit there and think about it. There would be many things जो आप शायद let go कर चुके हैं, लेकिन still it comes in your mind, it still bothers you, it still cultivate those sad hatred feeling. Maybe आपको sad feel होता है कि yeah, that happened. That means you're not over it. So you need to work on it. And then ask for help. मदद मांगना, that's very important. Because हमें लगता है कि यार हम मतलब कि कोई हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, या तुम तो बहुत रोंदू हो, तुम तो बहुत सेंटी हो, तुम तो बहुत दिल पे ले लेते हो बात. नहीं, if you need help, you need to ask for it. Then spiritual, जैसे हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो we जैसे कुछ लोगों को नमाज से बहुत सुकून मिलता है. बेशक, जो हम कहते हैं कोई there are certain people जो कहते हैं जब हम तलावत करते हैं ना कुरान की ऊंची आवाज में, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक नरिशिंग सी फीलिंग आती है कि कि हम अल्लाह की किताब की तलावत करें ऊंची आवाज में. So whatever works for you, जो आपके सोल के लिए नरिशिंग हो. आपने कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, so they every now and then they go to Kashmir or maybe Gilgit, maybe Baltistan, maybe Swat, Gwadar, to अकेले, ज्यादा नहीं तो चलो एक दो दोस्त पकड़ ले साथ, तो let's travel, let's have some time
कि दुनिया की जो परेशानियां हैं, क्योंकि इन जगहों पे तो बेसिकली आपके सिग्नल्स भी नहीं आते, सो यू आर आउट ऑफ टच, you don't have internet, you don't have Instagram, Snapchat, right? So that is a very good time to nourish yourself. Connection, nature, journaling, sacred place. So whatever is nourishing for you works for you. And then personal self care. आपकी क्या hobbies हैं, ठीक है? और अपने आप को समझना, personal identity on. There are so many people जिनको मैं जानती हूँ जिनको अपना नाम ही पसंद नहीं है, जो कहते हैं I don't like my name is very common. Why? Do we have any people जिनको लगता है कि उनका नाम उनको अच्छा नहीं लगता and they wish कि उनका नाम different होना चाहिए था या उनका नाम बहुत common है? Do we have those people here? कोई है ऐसा जो सोचता है? निशा कह रही है I love my name. I do have. जमीला. मेरा नाम बहुत अभी यूनिक है इस टाइम पे बिकॉज ये बहुत ओल्ड फैशन है, लेकिन I don't like my name. Oh, okay. Tell me, why do you know? What is the thing that you don't like about it? It's like old one ना, तो सब समझते हैं कोई आंटी है ये है. Okay, अच्छा Jamila, do you have Google mobile है? Can you Google what's the meaning of your name? Yeah, I know. It's like pretty woman. Pretty woman. कितना प्यारा मतलब है, and you don't love your name. I don't know. मतलब आज के ज़माने में किसी का भी नहीं होता है. Even मैं अपने स्कूल में सबसे अलग ही थी, बस एक जमीला और So कोई you're भी नहीं था. unique. ठीक है? अब there is a negative thing. You think कि मैं शायद थोड़ी सी आंटी लगती हूँ, but what's a good thing? You had a unique name. Maybe स्कूल में किसी का name नहीं होगा. नहीं था. College में नहीं होगा, right? नहीं था. Exactly. So that's a good thing to keep it with you. No? Thank you. Okay. I would suggest you to Google your name now. और इतनी प्यारी प्यारी गूगल आपके नाम की इतनी प्यारी तारीफें करता है आपको. मेरे नाम का मतलब है आसमानों पर तख्त. माय नेम इज अरीशा और मेरा नाम का मतलब है आसमानों पर तख्त. मैं तो बस आसमानों पर तख्त पे ही फ्लैट हो जाती हूँ. It's beautiful. Thank you. Okay, people belittle you for anything. Names are beautiful. Muzdalfa. Oh, this is a very beautiful name. And a very different name, Afifa. मेरे नाम का कोई और मिला ही नहीं, so it's so much fun. I love it. That's so true, Afifa. I have a cousin उसका नाम Afifa. She's such a sweet lady. Jharna is a very different name. Soema, ma'am, just got the link. Please repeat if I have missed anything important. You have missed a lot of things, Soema. And Soema is a very pretty name. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soema here. Hi. Is it Saima or Soema? It's Soema. Okay, Soema. Soema, आपके नाम का मतलब क्या है? Soema का मतलब है रोजेदार. सोम से निकला हुआ है. Okay. Yes. Som. And so people usually ask first. They ask my meaning of my name. Then they ask, आप रोजे रखती हो? मैं बोलती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. That's nice. I just got link. मुझे name. I have been waiting. मुझे link नहीं आया तो मैंने खुद message किया. तो अगर last में अगर थोड़ा सा overview मिल जाए तो. Sure, I'll definitely try. I'll definitely try. Thank you. Thank you for joining us. Allah Hafiz. No, not Allah Hafiz. Stay here. Not Allah Hafiz. Okay, we will continue to our training. Okay, I've kept this training. The PPT is very simple. Self-care is how you get your power back. Because what happens is कि हमने अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो तो हमारे पास है ही नहीं. वो तो हमने अपने शायद दोस्तों को दिया हुआ है, हमने टीचर्स को दिया हुआ है, हमने अपने पेरेंट्स को दिया हुआ है, हमने अपने पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ को दिया हुआ है. They control our life sometimes. I'm not saying everybody. Sometimes. So आपका attitude, they're controlling. आपके actions, they're controlling. आपका behavior, they're controlling. आप क्या खाएंगे, ठीक है, आप क्या पहनेंगे, आप किसको follow करेंगे. Because who I follow, who I unfollow. There are I know people, I know my friends जिनके partners, they are so
controlling, they even control के तुम अपने किस दोस्त को follow कर सकते हो, किसको unfollow, like, that even that they don't have such space because you don't have the remote. अपनी जिंदगी का अपना ही remote control आपके पास नहीं है. It's not in your hand. So ये बेहतर करना is very important. और ये शायद एक दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में नहीं होगा, ये महीनों में भी नहीं होगा. You need to work every day. You need to have that control, control back. When I say self-care is how you get your power back, you need to work on it. If I say you need to be happy, it's not बस button दबाया तो oh I'm so happy, oh I'm so sad. Happiness is a habit. कोई भी habit develop करनी पड़ती है. हमें बचपन में सिखाते थे ना कि 2 मिनट तक ब्रश करना है. I know I want to confess, I don't think कि मैं 2 मिनट तक ब्रश करती हूँ. maybe शायद 1 मिनट करती हूँ, बस रख दिया, because वो हैबिट डेवलप ही नहीं की. शायद जल्दी अम्मा को क्या पता चलेगा, तो हाँ मामा 2 मिनट हो गए. कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. कोई हैबिट अगर डेवलप करनी है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, राइट, एक हैबिट है ना, यू नीड टू डेवलप इट. तो आपको वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी है, जमा करनी है. आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, आई एम रियली हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद यू ऑल. दिस इज लाइक वन ऑफ माय हैप्पीनेस आज के दिन में. और क्या हो सकती है. आज सुमा मामा ने मुझे पराठा बना के दिया था, हालांकि मैंने कहा था कि मैं डाइट कर रही हूँ, बट शी मेड पराठा फॉर मी, सो दैट वाज हैप्पीनेस फॉर मी. एंड शी पुट सम देसी घी ऑन इट, तो वो मुझे अच्छा लगा था. सो आई लाइक दैट, दैट वाज हैप्पीनेस फॉर मी. तो वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी होंगी. यू नीड टू हैव योर पावर बैक. आपको क्या खुश कर रहा है, आपको क्या नरिश कर रहा है, वन डे एट अ टाइम. अगेन, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में जो है वो K2 सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया. एक एक स्टेप लेना है. You need to take small steps every day to build that habit, right? अभी I think हमारे पास जो जिन्होंने रजिस्ट्री किया था, there were so many people who were married. So so I'm assuming कि if they're married, so some of them would be having the kids. छोटे बच्चे भी होंगे, तो you would know the struggle कि बच्चों को कोई habit develop करनी पड़ती है. Sorry, my camera is हिल रहा है. So बच्चों को कोई अगर हैबिट डेवलप करनी पड़ती तो कितना उनके पीछे सर खवाना पड़ता है. एंड वी रियलाइज कि यार हमारे अम्मा बाबा ने हमारे पर कितनी मेहनत की है, कितना पीछे भागे हमारे खाने के लिए या कपड़े चेंज कराने के लिए. So that's it. Small steps every day. Take small step, right? If you don't have a habit of eating well, एक बस चलो अच्छा नाश्ता कर लिया. अच्छा नाश्ते में क्या है, maybe you have a boiled egg, maybe you have a proper टी ले ली, कॉफी ले ली, दूध पसंद है तो दूध ले लिया. anything that you think के आप ख्याल रख रहे हो अपने लिए. रात को सोने से पहले maybe लाइटें ऑफ की, मोबाइल साइड पे कर दिया, और अपने साथ वक्त गुजारा, अपने आप से बात की कि आज के दिन मुझे क्या बुरा लगा, आज के दिन मुझे क्या अच्छा लगा. बिकॉज जहाँ पे हमारे लिए अपने आप से ये बात करना जरूरी है कि आज के दिन हमें क्या बुरा लगा, हमें ये भी याद रखना है कि हमें अच्छा क्या लगा. बिकॉज हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव को साइड बाय साइड लेके चलना है. डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. if you start today, you're gonna do it for your future self. आप किसी और के लिए नहीं कर रही, you have to do it for yourself. आपका फ्यूचर, व्हाट्स योर फ्यूचर. फ्यूचर में आपकी एजुकेशन आ जाती है, फ्यूचर में आपका करियर. इफ यू आर करियर ओरिएंटेड पर्सन, देन आपका करियर है. फ्यूचर में योर स्पाउस, आपका पार्टनर, आपके बच्चे. सो इफ यू स्टार्ट नाउ, so you do it for your future. अच्छा, this is self care again. क्योंकि I will assume कि mostly I have ladies in the training. Ladies are attending the training. So अक्सर औकात हमें शिकायत होती है कि यार बाल बहुत ड्राई हो गए. So what are you doing for yourself? क्या आप जूड़ा बना के आप बैठोगे? So do you think you're gonna have a good hair? आपका जो बाल होगा वो अच्छा होगा? You need to nourish. तेल लगाते ना, हमारी दादियाँ हमें कहती हैं, नानियाँ बोलती हैं, माँ तेल नहीं लगाते, तुम कितने रूखे बाल हो गए. So that is a part of self care. आज बैठ के रात को सोने से पहले, अगर आपका शावर लेने का दिल इरादा है, तो 1 घंटे पहले शावर से बस अपने आप को तेल लगाओ. Massage yourself. Give that nourishment to your hair, to your scalp, because that's also a part of self care. And if you want to just do it for your future self, बालों को ठीक करना है तो फिर हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद तेल लगाना है, नरिश करना है.
So that nourishment is important for you as well. अपने mind को nourish करना, अपनी body को nourish करना, अपनी soul को nourish करना है. Okay. Self care. दिन में पता नहीं कितनी बार शायद हम अपने आप को बहुत नेगेटिव चीजें बोलते हैं, यू नो, कि जैसे कि एग्जांपल है, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे. दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग यू आर टेलिंग योरसेल्फ, दैट कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, राइट? या इफ यू लुक इन द मिरर, यार मेरा आज चेहरा बहुत रूखा लग रहा है, आई डोंट फील प्रिटी, यू नो, मे बी दिस पिंपल इज हियर, इट्स नॉट मेकिंग मी लुक प्रिटी, मैं यहाँ पे बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत काली हूँ, या मैं बहुत गोरी हूँ, ठीक है? या मेरे sorry to interrupt. नो प्रॉब्लम करना. यस, I want to say, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके बाल वाकई में फ्रीजी हो जाते हैं, and वाकई में वो हकीकत होती है कि as compared to before you're not looking as good. So I don't think there is anything, कोई झूठ तो नहीं है ना, we are telling ourselves सच्चाई. तो ये कैसे? I don't understand it. ओके. जाना खरी तो थोड़ी सी वो फैशन वाली बात आ जाती है, बट व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ योर हेयर? इज इट वेवी और व्हाट? Yeah, they are wavy. They're wavy. And sometimes they are so beautiful, और कभी-कभी खुद ही पता नहीं कैसे mood change होता रहता है उनका. So I tell myself आज बाल अच्छे नहीं लग रहे. That's fine. Don't you think? Do you feel bad about it? जब बाल अच्छे नहीं लगते, do you think it bothers you? It bothers me. You know, Yeah, sometimes. You know, मैंने इस सेशन का इतना इंतजार किया, मैं अपना पूरा वो सोच रही थी कि I would straight my hair and all that. So they're not straight, they're wavy. But I think that's fine. I still, you know, I'm still liking myself. Again, what's the mindset behind it? What's the mindset? When I have just had a cut recently, और cut ऐसा है कि जब मैं straight करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा look आता है, and frizzy hair में they don't look इतने अच्छे. So I just tell myself कर लेती हूँ. Yeah. So you need to maintain that. जैसे if you're coloring your hair, तो उसके लिए proper maintenance required होती है. So you need to do that. If you have frizzy hair, जैसे I have a frizzy hair problem. I put serum on after shower, like whenever my hair are damp. So you have the, you know, आपके पास जैसे नुस्खे होते हैं for that, for anything. So you need to work on that as well. Yeah, मैंने बहुत ज़्यादा ही खर्च कर लिया है इस चक्कर में. No, sometimes we think कि अगर हमें अपना ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपनी बालों का ख्याल रखना है, तो हमें महंगी चीजें चाहिए. No, right? Sometimes हम हमारे घर में से चीजें निकल आ रही हैं. So we need to think, you know, सस्ते में क्या हो सकता है. Yeah. So what do I have to tell myself when, you know, I think I'm telling the reality? So उस वक्त what do I have to tell myself? Tell yourself that you're beautiful, Dharna. Tell yourself you're beautiful. Tell yourself, मैंने लिखा दिया, you're worth the quiet moment. You're beautiful. Your hair are perfect. You have your hair has a texture, perfect texture. Because if you don't tell yourself, you're not gonna believe it. You need to believe it in order to, you know, feel it. Yes. Okay. Thank you. No problem. So this is the thing in our psychology. I often tell my clients कि अपने आप से अच्छी बातें करो. Tell yourself positive things. कि हाँ, I am worthy. I'm strong. Like if I show you my mobile, I don't know if you can. I hope so. You cannot see it. क्योंकि वो उल्टा नजर आ रहा है. So मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और हमने एप्लीकेशन के मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और मैंने उन एप्लीकेशन ग्रुप्स के नेम इस तरह से रखे हुए हैं कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कैपेबल, आई लव ट्रैवलिंग. और आई लव ट्रैवलिंग में मैंने क्रीम, उबर और इनड्राइव वाली चीजें डाली हुई हैं. आई एम स्मार्ट, आई एम एंटरटेनिंग, आई एम काइंड, आई एम आर्टिस्टिक, आई वैल्यू मनी, आई लव शॉपिंग. सो यू नीड टू बी काइंड टू योरसेल्फ. हम कहते हैं ना कि यार तमीज से बात करो, अच्छे से बात करो लोगों से, लेकिन वो अच्छे से बात करना, वो तमीज से बात करना, वो रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वैल्यू देना, वो अपने आप को भी देनी है. वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट तो हो ही आप, और आप ही होने चाहिए उस दुनिया में. सो दिस इज द थिंग. Give yourself permission to rest. This is extremely important.
बिकॉज मसला यहाँ आता है कि हम आराम ही नहीं करते। आराम का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई 12-13 घंटे की नींद चाहिए, या आपको पेट भर के खाना चाहिए, या आपको एक अच्छे से महंगे सैलून में एक अच्छा सा मैनिक्योर पेडिक्योर और प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए, या प्रॉपर बॉडी मसाज चाहिए। इवन यू नो कि किस रेस्ट की बात हो रही है। समटाइम्स यू नीड टू शट डाउन, समटाइम्स यू नीड टू सिट, सोफे पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ। अभी अभी बेशक ट्राई करके देखो, सुकून से बैठो, आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस मुंह के जरिए लो और नाक के जरिए निकालो। 3-4 मरतबा वो गहरी 3 से 4 मरतबा लंबी गहरी सांस से लो। जस्ट हैव इट विद योरसेल्फ, अपने साथ वो वक्त, वो 3 मिनट, वो 4 मिनट सिर्फ अपने साथ गुजारो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात को सोने से पहले, ठीक है, डू इट, ट्राई इट, एंड फिर खुद से सवाल करना कि कितना डिफरेंस हुआ। लेट मी मैं मैसेजेस एक बार देख लूं if there's anything. Okay, so we have this person. He says that his name is Altaf Hussain. So I'm sure you would Altaf, can you talk to us on mic? Let's have a discussion on your name. Okay, FIFA says your cousin. Yes, I can. Hi Altaf, Assalamu alaikum. Walaikum अच्छा, assalam. so बच्चे तो छेड़ते होंगे राइट नाम पे? छेड़ने के अलावा it used to be more like people used to say that because my name is actually Altaf Mahmood Hussain, but they say that tell me your first name and then the last name. So that was made not exactly fun of, but Peer Saab and those kind of things used to be said. So that was the case, and one time it happened that our dean was giving a lecture in the lecture room, and it was full of like 150 students, and he's a very serious person. And suddenly, while giving a lecture, he said that, "Kyun bhai, sahi keh raha hu?" And I was like, "He is a dean. What should I reply?" And the entire class was laughing. Oh, that's funny. So if you're laughing, I'm sure you have a very good coping strategy throughout your life with your name. Exactly. That's true. It still goes on till now. Yeah, So it's gonna be like this from till your last breath. But the future is much better because my son was just born like a month back, and I have named him Mustafa Altaf Hussain. Okay, that's nice, Mustafa. So I love the name Mustafa. I love the name Mustafa. Very pretty. And mashallah, congratulations, Altaf. Thank you so much. And thank you for talking to us. No problem. Thank you. No problem. Okay. अच्छा, कुछ कमेंट्स है तो वो आई थिंक मिस किन बात पे था तो वो मुझसे मिस हो रहा है. I mostly indulge in negative thoughts. How not to have those? Okay, who said it? Aisha Khan. Okay, Aisha, maybe in the start, if I mention it, if I'm not mentioned, then I'm gonna say it now. So basically, it all comes के किसी भी चीज को लेके हमारा माइंडसेट क्या है, ठीक है, हम सोचते क्या है, क्योंकि whatever we think हमारे थॉट्स से, बिकॉज हमारे थॉट्स जो हमारी कनेक्टेड फीलिंग्स है, राइट, एंड देन फीलिंग्स आर एसोसिएटेड विद आवर बिहेवियर. सो समटाइम्स व्हेन वी से क्या नो कि किसी ने अगर बहुत ही कोई नेगेटिवली बिहेव किया है तो so we judge the behavior most of the time, but we need to understand कि what was the thought, what do you think. अगर कोई घबराहट से क्लास से उठ के चला गया, नो, ये तो कितनी बदतमीजी की बात है. This is so insulting. This is so insulting for a teacher maybe. This was so insulting for their friends. But what do you think? वो feel क्या कर रहा था? What was the thought behind it? So it's very important. अगर आप अच्छा thought लेके आओगे, ठीक है, अच्छा सोचोगे, अच्छा feel करोगे, अच्छा करोगे. This is a very basic. I tell my clients, कचरा सोचोगे, कचरा feel करोगे, कचरा behave करोगे.
So you need to work. When I say that you need to build habit to be happy, you need to have it in your habit. You need to वो छोटी-छोटी चीजें खुशी की हैबिट की हैप्पीनेस की वो डेली कल्टीवेट करनी होंगी. डेली वो शायद एक पौधा उगाना होगा आपको हैप्पीनेस का. Then there would be a time you would say, yes, I am a happy. Like I can say I'm a very happy person. I'm a very, bubbly person. I can say, but was I like this since ever? No. I have cultivated this habit. जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान तो बस हर वक्त रोता ही रहता है, ये तो सैड ही रहता है. Because that is what they practiced. They practiced to be sad. They practiced to be depressed. I want to do self-care, but the motivation is so less for it. Again, Nisha, अपना ख्याल रखना. अपना ख्याल रखने के लिए ही motivation नहीं है. Can you talk to us, Nisha? Okay, there's an app. Yes, there are many apps. If I can share, I even took a screenshot. So jaldi I'll just say the names of it. Okay, so there, if you can write up, लिख सकते हो. Applications है, ठीक है? There's an application called Mindfulness. Another one, Shine, Calm, CALM, Calm. There's one called Better Me. There's another one, Aloebud, ALOEBUD. There's also called #selfcare. So these applications are wonderful and ये भी आपको काफी assist कर सकती है. Aska ने लिखा है कि therefore I don't know आपने पहले क्या लिखा है, but the last message is therefore it is sunnah to smile every time. So yeah, sure, I will try to write, or maybe I can just send it to Sir Mubarak. He can write it for you there in the message. Or maybe, sir, if you can attach photo, I don't know if we can attach picture or not. I really like the session till now, but I gotta go because my laptop is running. It's fine. I think that's Misbah. Misbah, thank you so much for joining us. That's fine. Light ka issue rehta hai. Oh, it's okay. If anybody has power issue, the show can go. It's fine. But thank you for being part of the session. Okay, so then on to the next slide. Okay, this is a very beautiful technique, a butterfly hug. Now, अक्सर कहा जब हमें रात जब हम like when we used to be little, तो जब भी हमें दोस्तों से मार पड़ती थी या हमें कोई बुली करता था या हमारा मजाक उड़ाता था, हम भागे भागे अम्मा के पास जाते थे, we would go and hug her. या कोई भी प्रॉब्लम है, अब्बा ने डांट दिया या अब्बा ने ठुकाई कर दी या बड़े भाई ने बड़ी बहन ने आज डांट दिया, ठीक है, तो what we would do, हम उस इंसान के पास जाते थे जो हमें अच्छा फील कराता था, सिक्योर फील कराता था. So if there's no one around you to make you feel calm, so I think you're there for yourself, right? So the butterfly hug, this is a very beautiful technique. So you hug yourself. You hug yourself, ठीक है? In this picture में there's instructions as well, ठीक है? Can you do it with me, guys? I hope you guys are doing, okay? I would be repeating instructions, so repeat after that, like do after it, act after that, okay? So cross your palms over your shoulder, just like up, just like, someone's hugging you. Hug yourself. So you hug yourself, you inhale and exhale slowly. तो हमने मुंह से सांस लेनी है, बहुत गहरी लंबी सांस लेनी है और हमने नाक के जरिए सांस को हवा को रिलीज करना है, ठीक है? So you 1, 2, 3. So you cross your palms over your shoulder. You give that yourself a little cozy hug. So opposite. You inhale from your nose. And then you exhale from your mouth. And make that whooshy sound. आवाज निकालनी है, ठीक है? चाहे तो अपनी आंखें बंद करने. बिल्कुल इस मोमेंट में just be very focused, be very calm and focus on relaxation. Focus on the
on the warmth you're feeling. अक्सर औकात होता है कि जब हम sad होते हैं, जो हमारे दोस्त they touch us, maybe they put their hands on our shoulder, maybe they हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, if we feel so calm, we feel so, this good technique. If you feel anxious, you can always hug yourself. If there's no one for you, make sure and remember actually that you're always there for you. Okay, someone is saying the hug is gonna hurt. Afifa is saying that she just got a booster shot, so the hug is gonna hurt. Then don't hug yourself. Maybe you could just, hold your hands. Jharna, oh, that's so sweet. Someone saying that they're on mobile data. That's so sweet. Okay, so is saying, is it okay to really experience? I'm giving my own example. Oh, pat yourself. If you that's for, I think, the person who had shot. You can pat yourself, like, good job. Thank you, Aisha, for that. Okay, so is it okay to rely on yourself when you have a disorder that you have had from a traumatic experience? Aisha, you can always rely on yourself. Basically, that should be the very first thing we need to do. अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा करना है, और अपने आप इतना यकीन होना चाहिए कि यार अगर maybe people can मेरा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन I'm always gonna be there for myself. अपने लिए हमेशा रहना है, अपने लिए अपने आप को अच्छी बातें करनी है, अपने आप से प्यार करना, अपनी इज्जत करनी है. Because अगर ये चीजें, if you don't have these for yourself, आप दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकेंगे. Maybe अगर करते भी हों तो शायद that's not with the same intensity. And Aisha, I suggest therapy to everybody. मैं आप सबको भी therapy suggest करूँगी, क्योंकि ये तो जैसे एक glacier होता है, so there is an iceberg, that's the tip. लेकिन उस iceberg, जो tip of the iceberg है, उसके अंदर अगर आप देखे जाएं, so there is a big, there's उससे भी ज़्यादा बड़ी, there is a chunk of ice. So these small interventions, these small activities, इससे आप अपने maybe शायद अपना mood बेहतर कर सकते हो. लेकिन if there's something you think for that you need a brief help, I would definitely suggest you guys to opt for therapy. Honestly, it's a life changing and it does wonder for people. Okay, so अपने लिए self care plan खुद develop करना है, ठीक है? This is very easy. ये आप खुद अपने take picture of this slide so that you can do it later. जब भी आपको time मिले, आज मिले, अभी मिले, अभी कर लो, रात तक करना है, रात में कर लो, maybe someday later you can work on that. So you need to work कि आपकी needs क्या है, ठीक है? Self care किस पे करना है? You need to work on your emotions. You need to work on your maybe finances. You need to work on your maybe in personal self-care. So अपनी need को pin, because एक slide में मैंने mention किया कि आपने step by step चलना है, ठीक है? तो take one chunk, take one part. कि यार this is something I think important इस चीज पे काम करना. So write that. What is that thing? Maybe you want to learn how to say no. That is a very important, I would say, skill, to say how to to tell people that no, you're not liking it, to tell people no, you're not comfortable with this, to tell people no, I don't want this. This is very important skill. Then consider your stressors. Okay, what are those things that are in your way कि आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे? वो स्ट्रेसर्स क्या है, वो ऑब्स्टिकल्स क्या है, ठीक है, वो चैलेंजेस क्या है, वो बैरियर्स क्या है, ठीक है? देन राइट दैट, देन डिवाइस सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज. जैसे कि आई नो आई लव एनिमल्स, ठीक है? तो मेरी लाइक आई हैव 5 cats, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे it makes very nourishing for my, it's very nourishing for myself. So कि what's
एक ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपके लिए काम कर सकती है? जैसे जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, उनको किताब पढ़ के बहुत वो जैसे आई एम नॉट अ बुक लवर, आई एम नॉट अ बुक पर्सन, सब मुझे कभी समझ नहीं आता कि लोग कैसे जल्दी जल्दी एक दिन में किताबें पढ़ लेते हैं, बट लेकिन दैट मेक्स देम फील रियली गुड, दैट्स व्हाई दे डू इट वेरी क्विकली, एक दिन में 2 दिन में खत्म कर ली किताब, ठीक है। देन प्लान फॉर चैलेंजेस कि if you are, let's, because I'm using this example, how to say no, because everybody is struggling with this, because हमने सीखा ही नहीं कि अपने लिए आवाज कैसे उठाने के लिए, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, जैसे होता है ना, बड़ा भाई होता है, खैर है तुम बड़े भाई हो, छोटे भाई अगर खिलौना मांग रहा है तो उसको दे दो, गिव योर टॉय टू योर यंगर सिबलिंग, योर शीज छोटी बहना है, क्या करे, तुम बड़े हो, तुम समझो, तुम समझोगे, वो नहीं समझ सकता। लेकिन आई थिंक उस बच्चे को भी समझने की जरूरत थी कि यार उसको भी तो वो चीज पसंद है, वो तो थी उसकी, वो क्यों दे, राइट? तो वहां पे अगर आपको वैलिडेशन नहीं मिल सकी, now is the time to give yourself validation. If someone else is not giving a validation to your feelings, to your emotions, you do it now. Challenges plan के लिए, then take small steps, ठीक है? अब लिख लिया अपने लिए, self care strategy भी बना ली कि this is the मैम, yes I have Soima. I have a question. प्लान बहुत अच्छा, आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग, बहुत अच्छा प्लान बनता है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आई लव स्टडिंग। Okay. बट मसला ये है कि मतलब मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, हर चीज जो भी सेल्फ केयर वगैरह, तो मसला ये जो बीच में, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, हम लोग प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं बट ऑब्स्टिकल हमारे लिए ये है कि वी प्रोक्रेस्टिनेट, हम लोग उसको पोस्टपोन करते हैं थोड़ा सा, या उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसको कैसे फेस करें? हालांकि बहुत डिटरमिन होके भी बोलते हैं कि भाई प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हमें ये रोज करना है, फिर भी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उससे कैसे, मतलब मुझे लगता है कि शायद मोस्टली लोग इसी चीज से ज्यादा मतलब दे कम अक्रॉस विद दिस कि भाई वो इनकंसिस्टेंसी जो आ जाती है ना, फिर वो सुस्त हो जाते हैं, फिर उनसे नहीं होता, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आई थिंक सोमा, ये तो नॉट मोस्ट, ये तो हर इंसान का आई थिंक मसला है। मैं ये देयर आर टाइम्स दैट आई स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन टू। अगेन, गोल क्या है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू? वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू आप किस, अच्छा, व्हाट इज योर गोल बेसिकली, कैन यू टेल मी? My goal, I have many goals, but right now my goal is to qualify CSS, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मसला ये है कि सब कुछ अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी अच्छी है, सब कुछ हो गया है, पर मसला आ जाता है कि जब टाइम मैनेजमेंट होती है ना, तो मैं वेयर आई लैक इज, जो मैंने फील किया है कि टाइम मैनेजमेंट में, कि हमें इतनी सारी चीजें एक साथ करनी होती है, पर क्या है कि वो टाइम मैनेजमेंट पढ़ना सब कुछ है, करते भी सब कुछ है, तो वो टाइम मैनेजमेंट से नहीं होता, या वो थोड़ा सा वो डिले हो जाता है, वो मतलब ये सारे मसले हैं सिर्फ। और अब वही बात है, जैसे आपने बोला कि बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं जिस दिन पढ़ाई अच्छी करूँ ना, यकीन करें, आई एम मतलब आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से बाहर होती हूँ, आई एम इन यूनिवर्स, इतना मुझे अच्छा लगता है। पर जैसे वो एक्साइटमेंट अभी आपके टोन से मुझे पता चल रहा है कि हाउ हैप्पी इट मेक्स यू फील। Yes, and when I don't study, literally I cry a lot. मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी होती है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ और मतलब टाइम इतना हो रहा है, ये फीलिंग होती है। सबसे पहले everybody here, we wish you good luck for your preparation. Thank you so much. Thank you. हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट में जाएं, schedule time to focus on your need. That's important. अभी I think you were not in the session when I said कि 24 घंटे का टाइम फ्रेम मेरे पास भी है, 24 घंटे का टाइम फ्रेम आपके पास भी है, इससे ना 1 घंटा कम है ना 1 घंटा ज्यादा है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है ना, आप पड़ेगा whatever suits। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं आई एम अर्ली राइजर, तो मैं सुबह पढ़ती हूँ, आई थिंक वो मुझे जल्दी चीजें याद रहती हैं। So what works for you? You need to plan for that. Have a timetable, schedule, अपने लिए एक schedule बनाओ, and then उसको टिक मार्क करती रहो, so वो आपको एक मोटिवेट करेगा, अच्छा ठीक है, and make a big tick mark. So वो जब विजुअल करोगी कि हाँ ये के स्टेप हो गया, डन, एक ये स्टेप हो गया, so it's gonna help you for that. ये भी हो जाता है, बट वो बीच में जो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है ना, oh my god, you need to do it for your future self. Are you gonna be, do you want to be a CSS officer or not? Yes. Yes, you need to
focus on your need. Need kya hai? सही. So thank you so much, Soima, for sharing us with Thank that. you. And lastly, when you're caring for all aspects of yourself, you will find that you're able to operate more effectively and efficiently. This is very important. अपना ख्याल रखना है. अपना ख्याल रखोगे तो फिर आसपास लोगों का ख्याल रख सकोगे. अपने बहन भाइयों का, अपने पेरेंट्स का, अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का. Right? So this is the end. We're gonna end our session here, and maybe quickly chat thoda sa pad lu if there's any query, there's anything left. Aisha is saying, OMG, yes, books are elite. I cannot relate to that because I'm not a book person, but I'm sure how happy it makes you feel. I love to read books. I literally read a book in an hour. Hafsa, please tell me, how do you do it? My course books के अलावा या अपनी therapy related books के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ सकती. हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए वैसे. So book reading is a very healthy habit. Then again, if अगर शायद मुझे कभी दिल किया, you know, so I will definitely read 1 page a day at least. कहीं से तो मुझे start करना होगा, right? Mehrunissa says, fruitful session. Thank you so much for a lovely comment. Keep up with the good work. Thank you. Thank you, Altaf. Looking to night sky and bloom flowers, making happy. That's so sweet. मुझे चांद को देख के बहुत खुशी मिलती है और आजकल I think थोड़ा सा it's like full moon, so वो बहुत खूबसूरत लगता है. Thank you, Umar, for a great session. Thank you for joining us, actually. Aisha Siddiqui, thank you. Harun, thanks for the great session. Thank you so much, Harun. Nisha, thank you so much for joining us, actually. Thank you. Hafsa says, thank you for beautiful reminders. Thank you for a lovely comment. Thank you for such kind words. Please love yourself, take care of yourselves. That is very, very important. Aisha Khan, this was very nice and reassuring. I love you, Aisha. We love you. You need to love yourself too. Jharna, thank you, Jharna. Aksa, self-care is essential. Yes, it is. Rushali. Rushali is a very cute name. Thank you, Rushali, for joining us. Thank you, Aksa, for your feedback. Love the session. So you guys can leave the session if you want. If you guys want, Sir Mubarak, do you have anything to say? If you guys want to leave the session, you guys can. I'll just reply you guys. Muzdalfa Khanani, amazing session. Thank you so much, Muzdalfa. और अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ. Ramesa, thank you, Ramesa. Ramesa मेरी junior है, and she's my neighbor as well. Thank you, Ramesa, for joining us. Aksat, you're amazing. Thank you. Thank you, Aksa, for saying that. Mehrunista says informative session. Thank you. Thank you, Mehrunista. And I hope, okay, at least you pronounced it correctly. I'm glad. Rushali says, love the session. Thank you. Aksa says, best of luck, Areesha. Thank you so much. I needed it. Thank you. If you guys want to open your mic and say something, you guys can, because we're winding up shortly.